नेक्स्ट सेक्शन डी डिस्कस करते हैं। इसमें किस बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Democracies are based on political equality. All individuals have equal weight in electing representatives. Parallel to the process of bringing individuals into the political arena on an equal footing, we find growing economic inequalities. A small number of arena on equal footing, we find growing economic inequality. A small number of ultra rich enjoy a high disproportionate share of wealth and incomes. Not only that, their share in the total income of the country has been increasing. Those at the bottom of the society have very little to depend upon. Their incomes have been declining. Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life, such as food, clothing, house, education, and health. In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. The poor constitute a large proportion of our voters, and no party will like to lose their votes. Yet, democratically elected government do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to. The situation is much worse in some other countries. In Bangladesh, more than half of its population lives in poverty. People in several poor countries are now dependent on the rich countries even for food supplies. इसमें क्वेश्चन फर्स्ट आपको दे रखा है, इन द लाइट ऑफ द अबव केस व्हाट इज द एप्रोप्रिएट कॉनोटेशन ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। क्वेश्चन 11 का फर्स्ट आंसर आपको दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द गिवन केस वन वोट वन वैल्यू इज एप्रोप्रिएट कॉनोटेशन ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, according to the given case democratically elected government would not prefer to loses the votes of which section। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो किस सेक्शन के वोट को लूज करना नहीं चाहेगी। आंसर आपको दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द गिवन केस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वुड नॉट प्रेफर टू लूज द वोट्स ऑफ पॉवर्टी रिडन पॉपुलेशन। तो पॉवर्टी से दबी हुई, गरीबी से दबी हुई पॉपुलेशन है, उसके वोट को उस गवर्नमेंट को लूज करना नहीं चाहेगी। वो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड की गई है वो गवर्नमेंट जो गरीब लोग हैं उनके वोट्स को लूज करना नहीं चाहेगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, वाई डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर अनेबल टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो पॉवर्टी के जो क्वेश्चन को मिटाने में क्यों अनेबल है, क्यों असमर्थ है। इसका आंसर आपको दे रखा है, democratic countries are unable to address the question of poverty as they have been slow and steady, not spectacular in attacking poverty. Another reason for this is that democratic countries has allowed the conditions of its poor masses to deteriorate consistency for their vote bank politics, as no party wants to lose their votes of such large proportion of voters. इसका एक कारण ये भी होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज स्लो और स्टडी होती हैं, मीन्स धीरे धीरे काम करती हैं और लगातार होती हैं, इसीलिए वो पॉवर्टी पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकती। दूसरा रीज़न एक ये भी होता है कि डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ होती हैं वो पुअर पीपल्स पर कम ध्यान देती हैं। सेकंड पैसेज आपको दे रखा है 12th, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द एयर ट्रेवल्ड टुडे इज द फास्टेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट कैन कवर very difficult terrains like high mountains, dreary deserts, dense forest, and also long oceanic stretches with great ease. Think of the northeastern part of the country marked with the presence of big rivers, dissected relief, dense forests, and frequent floods and international frontiers, etc. In the absence of air transport, air travel has made access easier. The air transport was nationalized in 1953. Air India provides domestic and international air services. Pawan Hans Helicopters Limited provides helicopter service to Oil and Natural Gas Corporation in its offshore operations to inaccessible areas and difficult terrains like the northeastern states and the interior parts of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्टेट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। आपको एयर ट्रांसपोर्ट के दो एडवांटेजेस बताने हैं, मीन्स एयर ट्रांसपोर्ट के दो फायदे बताने हैं।